एक ऐसा सवाल जो हमें हमेशा सताता है। क्या इस यूनिवर्स में हम अकेले हैं? They don't want to be known. What we can do is judge their actions. Do they want to help us? Do they want to harvest us? The big question is intent. Who they are, why they're here, why they stick around with us. क्या इस यूनिवर्स के अलावा भी कोई और यूनिवर्स? We'll see more of those sorts of videos, I think. Secondly, I think we'll see more documents. हाय फ्रेंड्स, आई एम रजत और आज हम इन सभी सवालों का जवाब देंगे। पर इन सभी सवालों का जवाब देने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इन सभी सवालों की शुरुआत कहाँ से होती है। यूएसए में एक जगह है जिसे एरिया 51 भी कहा जाता है, जो कि लॉस वेगस में है, जो कि नवाडा में है। ये ग्रूम लेक के पास स्थित है। यूएसए की गवर्नमेंट इस एरिया 51 को बनाने में काफ़ी सीक्रेट रूप से मदद करती है। एरिया 51 को काफ़ी प्लानिंग के साथ बनाया गया, जिसे छुपाने की बहुत कोशिश की गई। When the US Air Force takes control of Area 51 in 1978, it's in the middle of the most. पर जैसा कि हम जानते हैं, सीक्रेट्स काफ़ी दिनों तक छुपे नहीं रहते। The late 1940s, Americans have been fascinated by a mysterious region in Nevada known as Area 51. What exactly goes on at Area 51? The Area 51. Area 51. Area 51. The Air Force has recently made public an archive of UFO reports and investigations. Are there any alien remains in Area? बॉब लेजर नाम के एक व्यक्ति ने 1989 में यह क्लेम किया कि वह एरिया 51 में काम करते थे, वो भी सेक्टर 4 में। Bob Lazar is someone who became famous back in 1989, and that claim is that he worked at a place just south of Area 51. He called it S4. वो ये क्लेम करते हैं कि वह एलियंस के साथ मिलकर फ्लाइंग डिस्क पर काम करते थे, जो कि गवर्नमेंट के कब्जे में थी। According to Lazar, before he worked at S4, he was a physicist. My name's Bob Lazar. I'm known for working at a classified base known as S4 out in the Nevada desert near Area 51. And there we reverse engineered alien spacecraft. तो क्या गवर्नमेंट और एलियंस मिले हुए थे? Question is, what possible visitations has the US government been keeping from the public? बात आती है 1996 की। 17-year-old मैकेनिकल इंजीनियर ब्रूस बर्ग्स का इंटरव्यू लिया जाता है और इंटरव्यू में वे क्लेम करते हैं कि वह एरिया 51 में काम करते थे किसी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बंदे के साथ जिसका नाम था जे रोप। This man is a 71-year-old mechanical engineer who, like Bob Lazar, claims to have worked at Area 51. He started working there in the 1950s on a flying disc simulator built to train US pilots. He said he's been given permission to talk to us about certain specific aspects of his work. वह ये क्लेम करते हैं कि वह उनके साथ मिलकर फ्लाइंग डिस्क पर काम करते थे। We received the disc from extraterrestrials. This particular one that I had to work on, or did work on, was from the Kingman crash, and that was later on taken to a Nevada test site where, at the time, I didn't know. Were there any alien bodies recovered? No bodies. There were 4 live, feeling good guys. 4 live extraterrestrials? 4 live, feeling good extraterrestrial type individuals, yes. And where were those 4 extraterrestrials taken? Initially they were taken in New Mexico. And then several months later they were taken to the Nevada site. His fantastical claim was that he worked at Area 51 with an alien codenamed J-Rod for 16 years on this simulator project. J-Rod is a gray alien, about 5'4". His role was only as a translator, scientific translator. तो क्या UFOs, aliens, flying disc ये सब रियल हैं?
box, moving target. No, I took an auto track. Oh, okay. Oh my gosh, dude. Wow, look at him fly. डैन ब्रूस नाम का एक व्यक्ति यह क्लेम करता है कि वह एरिया 51 में काम करता था। वह क्लेम करता है कि वह एरिया 51 में एलियंस क्लीनिंग वायरस पर काम करता था। Microbiologist, a retired one now, but continuing somewhat the practice involved in a very unusual project called Lotus. I am a 20-year retiree from Majestic, first having been brought in 1986 under the auspices of the Committee of the Majority, and specifically working for the Majestic 12, assigned to Project Aquarius. वो ये भी बताता है कि वह एलियंस के साथ मिलकर काम करता था जिसका नाम जे रोक था। And how you communicated with him telepathically, that struck me as incredibly real. And from that point on, I was very interested in what you had to say, because I said, this man really experienced this. This is not bullshit. This is the real thing. So if you could reiterate kind of how you started working with J-Rod. Well, he was working with me before I ever knew it. Of course, he was on board, as I understand. तो क्या एलियंस रियल हैं? On Facebook who say it looks like Dobby from Harry Potter, or a ghost or an alien, or a kid in flip-flops and underwear. एक प्राइवेट क्लोथ कैंथन आर्नोल्ड यह क्लेम करते हैं कि उन्होंने सियाटल शहर के पास एक पहाड़ है जिसके पास उन्होंने 9 शाइनिंग यूएफओस को उड़ते हुए देखा। वो ये भी बताते हैं कि वह यूएफओस की स्पीड 2000 किलोमीटर पर आवर थी। Strange flying discs have been whizzing at 1200 miles an hour over the western United States. के बाद अमेरिका में बहुत सी जगहों पर यूएफओस और एलियंस को देखा गया था। Other world or from a parallel universe. Nobody's ever really seen it or know where it's at, but it's out there. Awareness of who they are, what they're doing. एक आर्मी ऑफिसर कर्नल विलियम ब्लैंकचार्ड, जो कि ऑफिसर थे रोजवेल आर्मी एयरफील्ड के, यह स्टेटमेंट लॉन्च करते हैं कि अभी तक जो भी यूएफओस और एलियंस से रिलेटेड जो भी खबरें आई हैं वो सब रियल हैं। तो गवर्नमेंट ये मान लेती है कि यूएफओस और एलियंस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें उन्हें मिली हैं वो सब रियल हैं। इतना सब होने के बावजूद भी गवर्नमेंट ऑफिशियली ये क्लेम नहीं करती है कि एलियंस रियल हैं। तो यूएफओस और एलियंस की मिस्ट्री आज भी मिस्ट्री ही है।